Okay. So in the last few classes, we have seen the installation, right, of both JDK and Eclipse. Eclipse is an IDE, and then we tried the basic programs both from command line as well as from Eclipse IDE, and we have looked upon some of the basic data types like integer, float, just a kind of introduction. We have not delved very in depth to each and any of the topics, which we will do soon. Let's discuss something while we were trying to compile the program and execute the program on the command line, right? So what was the process? The first thing was, if you have a file, say for example by the name my not good that way. See this. Okay. You have a, say for example you have a file that you have written my prog, and this is a Java file. Okay. What should be the extension of the file? Dot Java, right? So dot Java. So we know that uh, you have got a file by this name, myprogram.java. Then you have got class defined inside it, right? With an identifier, that is the name, right? The body starts and the end somewhere, right? Then you have got some variables defined over here, right? That means the data part, right? We call these variables as typically as when an object is created, we call them as instance variable, ठीक है? Why we give the name, we will see soon, ठीक है? Then we have got a lot of behaviors. By behavior I mean the methods or the functions that you typically know in other languages, right? So you have both data as well as methods, or is other thing to call it as these variables is state and behavior. And when I am saying state and behavior, I am not talking in the context of the class definition. I am talking in the context of object when they are formed, right? An object has a state. State means all the variables will have certain values defined inside it, right? So at a particular instance of time, I've used the instance also, instance variable. At a particular instance of time, those state variable will have certain specific state, and maybe after some time some of the values of the state variable may change, and then the whole of the state of the object, we say, that is in general is changed. Clear है? Right? Okay. So that is why we call these variable as state and these methods or function as behavior. So when we create an object of a class, we have defined a class which was a description rather, right? It was nothing more than a description of something which will exist, right? And that may have a multiple copy of it, right? For example, we have a description of the chair. So I could make a class chair which may specify how many legs it have, okay? Whether it's have a writing base or not, okay? What is the typical size of it, the base length and width, right? Whether it has a back support or not, all those things we are going to mention, right? So that is what is the description of the class chair. But when we create the objects of the class, and you can see all these chairs in the class, there are so many chairs, right? So every chair is a particular instance of the chair class description, or the chair class in short. Okay? So class is nothing but it's a kind of, or it's a way of defining a user defined or a derived data type, right? ये होता है. And from that data type, we create a number of instances, right? Rather, we prefer to call them objects also. ठीक है? इंस्टेंस कहें ऑब्जेक्ट कहें एक ही बात है. ठीक है? इंस्टेंस वेरिएबल कहें तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट के स्टेट के किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल के स्टेट की बात कर रहे हैं. सही? ठीक है?
So this was the whole idea how we have seen file structure, then class within it, and then methods. There could be a number of methods also, right? And there was one main method which was the gateway, or the rather you can say it provides the entry point for the program to enter. That means the first method to be called when we try to execute an object instance of a class, right? Or rather the program itself, which contains the main method, right? So it will introduce the main method, right? कैसे select होता है भाई ये? Okay, चलो नीचे भेज देते हैं. So what was the first step? If I use the program with the name myprogram.java, how do we compile it? We will have to go to the directory in which this program exists. Okay, then file name, right? So let's suppose the file is in C drive itself. So let's just go to the C drive, right? And then we will say Java C, that means Java compiler. And where is this Java C.exe file is located? No, no, it's not in the C drive. Your program is in the C drive. It's referred in the environment variable, which is which is the path, right? And that referred path is still the bin directory of the installation folder of Java, right? अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे C drive, then let's go to the program file. Then we have got Java, right? Then we have got JDK 18 or 19, whatever. अभी तक जो path हमें मिला है, this path till JDK, this is typically called as Java underscore home, full capital में. अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको चेंज करना है तो आप क्या बोलेंगे? जावा अंडरस्कोर होम. ठीक है, सी ड्राइव में है लेकिन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तो आगे है ना पूरा. अब यहाँ पे सी ड्राइव ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि डायरेक्टरी मैंने सी ड्राइव में हमने डाल रखा है. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है ना. ठीक है, तो ये जो पाथ आपका है सिर्फ यहाँ तक, बिन से पहले तक का, इसको हम बोलते हैं जावा अंडरस्कोर होम, पूरे कैपिटल में लिखते हैं. और इसके अंदर अगर बिन वर्ड तक हम पहुंच जाएं तो इसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं? पाथ नाम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में. एंड देयर कुड बी मल्टीपल सॉफ्टवेयर व्हिच हैव देयर पाथ डिफाइंड टिल देयर बिन डायरेक्टरी. ठीक है, तो बिन का मतलब ही क्या है? बाइनरी. बाइनरी मतलब इससे आपको बेसिकली क्या मिलेंगे? ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? exe फाइल्स या अदर फॉर्म ऑफ exe फाइल. जैसे आपको डीएलएल तो खैर अब डालना शुरू किया है इन्होंने, डीएलएल डाल दे रहे हैं. अदरवाइज पहले इसमें डीएलएल नहीं आता, डीएलएल की सेपरेट इन्होंने रखा हुआ था. तो अ, या तो जैसे आपका बैच फाइल होती है विंडोज में, लाइनस की बात करें तो आउट फाइल हो गई, या फिर शेल फाइल एसएच फाइल हो गई, राइट? तो वो उस तरह की फाइल सारी आपको बिन डायरेक्टरी मिलेगी. ठीक है, अगर यहाँ पे जावा सी डॉट exe फाइल है तो हो सकता है वहाँ पे आपको लाइनस में जावा सी डॉट आउट फाइल मिले आपको, राइट? यहाँ जावा फाइल है जावा डॉट exe, वहाँ जावा डॉट आउट मिले करस्पॉन्डिंग सेम, या हो सकता है डॉट सी एच भी मिले. ठीक है, एस एच सॉरी, शेल फाइल. तो इसके अंदर आपकी जावा एंड जावा सी दोनों मौजूद है. जावा सी डॉट exe, जावा डॉट exe दोनों मौजूद हैं. तो ये हम रन कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, और बेसिकली आपका जो पाथ है वो बता रहा है कि अगर आप जावा सी कमांड रन कर रहे हैं तो जावा सी को खोजने के लिए कहाँ जाना है. इसको पाथ कहाँ मिलता है? आप जाएंगे माई कंप्यूटर में, हाँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा आपको. जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन दिस ओनली. माई कंप्यूटर किधर गया? चलिए मैं एक फोल्डर खोल के पीछे आता हूँ. थोड़ा सा मैंने अपने उसको मैं सब कर रखा है डेस्कटॉप वगैरह को.
This PC show more of properties. Okay, here it was there. Properties. Then कहाँ दिख रहा है आपको? अच्छा हाँ, यहाँ इन्होंने मूव कर दिया ना। अपडेट अगर करते रहें तो यही होता है सिस्टम को कि ये चीज़ें चेंज होती रहती है। अब इसमें देखिए पाथ देखिए, पाथ यूज़र में भी होगा और पाथ आपका सिस्टम वेरिएबल भी होगा। यूज़र वेरिएबल का मतलब है कि देयर आर मल्टीपल यूज़र देन दैट पर्टिकुलर पाथ बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर यूज़र। व्हेreas सिस्टम वेरिएबल में अगर पाथ है तो इसका मतलब दैट पाथ, हियर अगेन इट्स अ पाथ राइट, दैट पाथ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको आप एडिट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पे पाथ आपका डिफाइंड है। ये 18 है चूंकि इसीलिए 18 को पिक कर रहा था राइट, बिन तक है ये पाथ राइट। सिमिलरली अगर जावा होम को देखें तो मेरे ख्याल से जावा होम सिस्टम में ही डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड नहीं है। लेट्स सी, ये भी 18 है राइट। इन दोनों चीज़ को हम 19 वाले फोल्डर को चेंज कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगी राइट। तो बहरहाल these are the references, these environment variables. Why we call it environment variable, by the way? This is a general question, not belongs to Java. Environment ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से को कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जैसे आईडी है, इक्लिप्स वगैरह है, ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट पे आप टाइप कर रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, एक डॉस का शेल है राइट। तो इट विल आस्क द इन्वायरमेंट वेयर इज दिस थिंग लोकेटेड। ठीक है, चाहे लोकेशन के बारे में हो या किसी और चीज़ के बारे में हो। तो जो प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक अ वेरिएबल विच बिलोंग्स टू द इन्वायरमेंट इन विच एन एप्लीकेशन इज रनिंग, ठीक है, तो दैट वी कॉल एज इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये विंडोज की इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो सी ड्राइव में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है और जिस कमांड विंडो में चल रहा है, यानी आपका जो जो शेल है बेसिकली, ठीक है, वो रिफर करता है इसी इन्वायरमेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए कि ये भाई जावा सी जो है वो पाथ वेरिएबल में कहीं पे डिफाइंड है। ठीक है, अगर पाथ में कहीं पर डिफाइंड है तो उस लोकेशन पे जाकर के वहां से उसको पिक कर लेता है। बट योर माई प्रोग्राम डॉट जावा शुड बी हियर, अदरवाइज यू विल हैव टू गिव द फुल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, द नेम विद द फुल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जावा सी आपने कहा, जावा सी करने के बाद कहा माई prog डॉट जावा एंड देन यू प्रेस द इंटर की। ठीक है, ये इंटर की का सिंबल मैंने बना दिया। If there is any compilation error, you will see the compilation error over here. Otherwise, what will happen? The program will remain silent. You will see nothing, and you will come to the next line. Then what will happen? You want to run it. Now, running means you want to interpret it. This step was what? It was compilation. Compilation, and now you want to run it. So all you have to do is again on the C prompt. What we have done is Java space my program. Did we add a dot class over here? No, we just said my program and enter key, right? And you saw the output like hello world or whatever the output is there, that you see appearing over here, right? ये आपका आउटपुट आ गया था, ऐसे ही था वो, सिंपल सी बात था, सिंपल स्टेप से। Now once you have completed this compilation successfully, if you have looked at the directory, then you will find along with my program.java, you will find another file my prog dot class with the same name with dot class extension, right? Now this dot class file is typically written in something what we call as bytecode. Bytecode. This is written in bytecode. ठीक है, सो नॉर्मली आप सी प्लस प्लस या सी में अगर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो डायरेक्टली ईएक्सी फाइल बना देता है। ईएक्सी फाइल फिर और वो बना के उसको चला देता है, राइट। तो दैट्स अ वन स्टेप प्रोसेस जिसमें आपको एक्सिक्यूटेबल फाइल मिल जाती है। दिस इज नॉट एक्सिक्यूटेबल फाइल, दिस इज समथिंग इन बिटवीन। ठीक है, अब आप जब जावा माई प्रोग्राम करते हैं तो क्या करता है आपका जावा, दिस इज द इंटरप्रेटर, दिस इज द इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, माई प्रोग्राम नाम की क्लास को खोजता है, और जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी डॉट क्लास फाइल में होगी। ठीक है, बिकॉज वी हैव केप्ट द नेम ऑफ द
पब्लिक क्लास, पब्लिक में थोड़ा पहले जा रहा हूँ, जो लोग पहले से पब्लिक समझते हैं सी प्लस प्लस के कंटेक्स्ट में या जावा कंटेक्स्ट में, तो दे विल अंडरस्टैंड. So by default we have given the same name as the name of the class, the name of the file and the name of the class we have kept it intentionally same, right? And that was the purpose, because it will be in a position to search that particular name from within the that particular dot class file which has got the same name, right? तो ये जो इंटरप्रेटर है वो उसको फाइंड आउट कर लेगा. फाइंड आउट करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास में जाएगा, उसके मेन मेथड में जाएगा, मेन मेथड को एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा, राइट? तो अब यहाँ जो कंट्रोल आता है इसका, ये जो सेकंड स्टेप आया वो क्या है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, जिसकी इसका मतलब हो गया ट्रांसलेशन, राइट? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन किस में करता है? ट्रांसलेशन करता है बाइट कोड से मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में. मशीन डिपेंडेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर environment both are involved. It could be a Windows system, it could be a Linux system, it could be a Mac OS system or whatever, right? It could be a 32-bit machine, it could be a 64-bit machine. So whatever the architecture and the environment is there, depending upon it, this bytecode is translated at the runtime. And during the translation, each and every line is executed one by one. बात clear हो रही है? Fine. So that means in Java we have got a two-step procedure. Two-step procedure. One is that we use Java C, that is the compiler, program file name with the .java extension, right? And we provide it to Java C, and then what happens? We get a dot class file with the same name, right? And then we provide this dot class file to Java, which is the interpreter, and it executes it, translating line by line, right? And so I will use interpret instead of execution, right? Interpret it, and you see the output on console, right? आउटपुट और कॉन्सोल आपको दिख गया, राइट? तो ये पूरा आपका प्रोसीजर हो गया. तो ये जो जावा है, ये जो इंटरप्रेटर है, ये जो एक्सिक्यूट कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है, ये किस मशीन मशीन पे इंटरप्रेट कर रहा है? रन तो होना है मेरी इस मशीन पर जिसमें मेरा इन्वायरमेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल, और मेरी 64 बिट मशीन है, ठीक है? लेकिन और इसका मतलब ये इस पे ट्रांसलेट कर रहा है, राइट? इसके लिए ट्रांसलेट कर रहा है. और इससे पहले जो डॉट क्लास फाइल थी, ठीक है, ये किसके लिए थी? नहीं, ये थी एक एक थर्ड पार्टी मशीन, नॉन एग्जिस्टिंग मशीन, ठीक है? दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जिसको हम जेवीएम भी कहते हैं, ठीक है? जेवीएम, ये बनी थी जेवीएम के लिए, जावा वर्चुअल मशीन. नाउ जावा वर्चुअल मशीन इज अ स्टैंडर्ड नाउ which doesn't exist in reality, ठीक है? But when you talk about Windows or the Linux, even before coming to the real machine, real operating system in the machine, this Java virtual machine is running, and basically this interpreter is nothing but it is also a Java virtual machine. Well, it gives a starting point to Java virtual machine. Whenever you say Java space the class name, then that means you are starting a new JVM, and under that JVM this program is running. ठीक है? तो आप एक सेपरेट जेवीएम हर प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? This Java virtual machine is not a Windows machine, it's not a Linux machine, it doesn't have to do anything with them, right? It's just a third party virtual non-existing machine, ठीक है? From which it has to come to a midterm, right? From this midterm, it can translate to any other specific platform, right? So this is something which is a which machine is a this is a midterm machine, in between machine, right? ठीक है? जैसे आप अगर कुछ कुछ आपको ट्रेड वगैरह करना है स्टॉक मार्केट में, तो एक बीच में ब्रोकर होता है, राइट? ठीक है? चाहे आप एनएससी में कर रहे हैं, चाहे बीएसई में कर रहे हैं, है ना? अब तो इंडिया से बाहर भी आप किसी कंट्री के अगर मार्केट में करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, बट देयर हैज टू बी अ ब्रोकर इन बिटवीन. So that broker is common. Market may be different in the same way. So this is what we have, a Java virtual machine. So whenever you say that I am saying Java my program, that means you are allocating a new virtual machine to your program, and then under that machine the interpretation starts. Along with that interpretation, you see the result. ठीक है? तो लाइन बाय लाइन अपने इस कोड से डॉट क्लास फाइल से वो कन्वर्ट होगा मशीन एक्सेक्यूटेबल फॉर्म में. क्लियर होगी बात? So that's bring into so that's why we call Java as
Not a compiled language, not an interpreted language, but a compiled and interpreted language. ठीक है? Compiled and interpreted language. यहाँ तक क्लियर है? ये compiled भी है, interpreted भी है. अच्छा, why this has to be broken down into two steps? One is the compilation, the other is the interpretation. Multiple platforms, right? So right from the beginning, Java advertised that we are good in the way that you can write the program on one machine and then you can execute the program on any of the machines. So that means you do not have to change your code as per the machine. And when I say change the code, that means the compiled code. Okay. So which file do you think is the one which we can take on some other environment? Com- Bytecode, right? So this dot class file, which is the bytecode, this is the file. If I have compiled in the Windows environment, I can successfully take it to the Linux environment and use the Linux environment Java version to basically interpret it, right? Of course, the JDK for Linux will be different. The JDK for Windows will be different. It's a whole kit that will be different because it has to ultimately translate to the machine dependent form. So it must be having some different notions and the codes inside it, right? But this dot class file is something which you have compiled at one of the platforms, then you can take it to any platform, any possible platform, and then you can interpret over there. You didn't get that? Okay. Let me repeat it again. Okay. कुछ बैकग्राउंड है आपका प्रोग्रामिंग का कि एकदम न्यू है प्रोग्रामिंग से? सी प्लस प्लस किया है. सी प्लस प्लस से हमने देखा होगा डॉट exe फाइल सीधे बनती थी, राइट? और exe फाइल बनने की वजह से क्या होता था कि आपका सी प्रोग्राम अपने जैसे ही इसको आईडी पे आप जब रन क्लिक करते थे, वो अपने आप उसने डॉट सीपीपी से exe फाइल बनाई और रन कर दिया, राइट? तो उसमें उसमें क्या हुआ कि बीच में कोई इंटरमीडिएट चीज़ नहीं बनी। अगर आपने वो फ़ाइल .exe फ़ाइल उठाई और उसको जाकर के लाइनक्स सिस्टम पे आप जाके चलाना चाहेंगे, तो वहाँ पे नहीं चलेगी। वहाँ पे डॉट आउट फ़ाइल चाहिए उसको, राइट? तो देयर इज़ नो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंस ओवर देयर, ठीक है? या पोर्टेबिलिटी कहें, पोर्टेबिलिटी नहीं है, पोर्टेबिलिटी नहीं है। बट हियर आई एम सेइंग दैट इफ आई पिक अप दिस डॉट क्लास फ़ाइल व्हिच इज़ कंपाइल्ड इन द विंडोज़ एनवायरनमेंट and I take it to the Linux system, and there I use the Java which is installed on the JDK of the Linux, and I say Java space my program, it will interpret over there. Okay. So the compiled file which is compiled for, that is why it is compiled for the Java virtual machine, a third party machine, not for the Windows or the Linux machine, right? So that if we want, we can port it to any other platform, and that's where it comes the portability as a feature of Java. Okay. So Java is a compiled and interpreted language. Java is a portable language. ठीक है? बात क्लियर होगी? Fine. Actually क्या होता है कि uh, when we talk about portability, we this is just to give example that we can compile the dot class file into a bytecode, and then we can take this dot class file into some other machine and we can try over there. You can in fact try that and you will see that it works, right? But in fact, what happens is when you use it is actually in general is said about not just one class, but a bunch of classes which are related. ठीक है? So you must have seen about libraries. You've heard about libraries, right? In different languages. So what is a library? It's a group of a number in Java. It's a group of a number of classes which are compiled in dot class, right? And we try to compress them, right? Package them into one file, and the extension of dot that file is dot jar. Jar means Java archive. Archive is a compressed package structure, right? Into one thing, right? So there could be 100 such class files which are related. ठीक है? मान लीजिए आपको पीडीएफ से रीड एंड राइट ऑपरेशन करना है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है पीडीएफ से आप जो लाइब्रेरी यूज करेंगे, एक्रोबेट वाली प्रोवाइड करते हैं, थर्ड पार्टीज बहुत सारी प्रोवाइड करती हैं, जिसको आप अपने यहाँ यूज करके एक फाइल को, अब जो आपने पीडीएफ फाइल आपके पास है उसको रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। बट देन यू हैव टू यूज सर्टेन लाइब्रेरीज, एंड दोज लाइब्रेरीज व्हिच यू कैन यूज इन योर प्रोग्राम विल कम एज अ डॉट जार फाइल, and if you open a jar file and you see it, you will find nothing else except the a set of dot class files. So these dot jar files are portable, irrespective of which environment you are
platform you are using, right? You can just put it into the class path of your project, and then you can simply use them. Yeah, use them. ठीक है? Clear होगी बात? Okay. Yeah. इंक्लूड करके आप सी प्लस प्लस में चूंकि डायरेक्टली आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एसक्यूएल फाइल बनती है, तो उनकी लाइब्रेरीज जो आती हैं वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही आती हैं। ना ना, उनकी लाइब्रेरीज अलग से आती हैं। ठीक है, जो भी लाइब्रेरीज होंगी वो अलग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लाइब्रेरीज होंगी। आपको देखेंगे जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर कि किस सिस्टम के लिए आप डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर आप किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको चूज करना पड़ता है किस प्लेटफॉर्म के लिए चलेगा। ठीक है, बट अब जावा की लाइब्रेरी आपको करना है, जैसे पीडीएफ का एग्जाम्पल दिया, पीडीएफ पे आपको काम करना है, तो आपको सिर्फ एक जार फाइल मिलेगी, चाहे आप कहीं भी यूज करें उसको। ठीक है, मतलब एक जार फाइल नहीं, देयर कुड बी मल्टीपल जार फाइल्स, बट दैट विल बी वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज इन ऑल द सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके फाइन। सो we have seen how to compile and run the program on the command prompt. We have seen on how to work on IDE. So we will start with the IDE itself, क्योंकि ultimately आपको IDE पे काम करना होता है, and we will first start with the very basic concepts. ठीक है, ताकि जो लोग प्रोग्रामिंग के लिए नए हैं उनका भी एक थोड़ा सा ग्राउंड बन जाए। But still I will suggest them, I will advise them to go on their own, catch up with their friends, and try to get up to the pace as early as possible, right? क्योंकि एक 3 साल का जो से BCS करके कोई बंदा आ रहा है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस तो जाहिर सी बात है एज अ प्री रिक्विजिट नहीं पढ़ाया जा सकता ना। तो वो करना आपको अल्टीमेटली अपने पे ही पड़ेगा, या किसी का बैकग्राउंड कमजोर है तो उसको अपने पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू शुरू में हम ये कर सकते हैं कि पेस को ऐसा रखें, मिक्स रखें कि आप जो बेसिक्स जिनके जिनकी लैक कर रही है उनका भी थोड़ा ख्याल रखें, और जो लोग ऑलरेडी कुछ जानते हैं उनका भी ख्याल रखें। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, हमें एडवांस कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। अब वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुश्किल से 3 महीने का आपका सेशन होता है, राइट? तो जब वो आ जाएगा तो उस वक्त आपको उतनी अंडरस्टैंडेबिलिटी और उतना 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 आपका जो आपका अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, वो बन जानी चाहिए। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क वेरी वेरी क्विकली। So we have installed the Eclipse, and then this is I think the latest version of the Eclipse. Let me start. Okay, so guys, in the last class we have seen a few demonstration on how to make a project. So when we make a project, we will see the name of the project over here. Then you will see something GRE. So this is Java runtime environment, right? So there are certain libraries. These are all libraries that we have discussed just so far. So you can see the name ends with .jar extension. So there are so many libraries, and each and every jar file, if you try to uncompress it, take it on the desktop, just uncompress it, convert the extension to .zip and uncompress it, right? In that case, you will see that it contains a lot of .classes files, right? Each library will contain lots of .class files, right? So these all are default libraries which are basically used while you try to run your application. Okay? Then you have got .src, and then the last class we have seen that we always should tend to create a package, and the name of the package is in.ac.jamia which resembles to the selectively I have chosen this, which resembles to the domain name of the website, that jamiahamza.ac.in, right?
and then inside that package we have created Java prog dot Java, this file. So similar is for this project also, right? We have just tried to mimic the same thing again. Okay, then let me try to find out what is the workspace. So this is our workspace, existing workspace, right? यूजर के अंदर SHI नाम से का फोल्डर है, उसके अंदर Eclipse workspace underscore MCA, ये आपका workspace है. So what is the workspace? A folder structure where all your projects and all your Java programs, everything is installed, kept rather. ठीक है, saved. So let's go to the to this folder physically and let's try to analyze what is created when we have created the project in the IDE, right? In the directory structure. Okay. So let's go to the users folder first. C drive users folder. Users and then SHI, right? Then what was the next folder? Eclipse Workspace MCA. This was the folder, right? And then these were the three projects: class demo project, demo, and demo Java, जिसमें E capital आ गया है, right? So anyway, so these are the three projects, and there is some folder called as metadata. Just don't bother about this folder as of now. So let's try to explore one of these folders. Let's say demo. अभी आईडी पे आपको क्या दिख रहा है? अगर आईडी को मैं ऐसे कर दूं, लेट मी जस्ट, और आपको ये फोल्डर, ठीक है, अब देखिए क्या दिख रहा है. ये डेमो प्रोजेक्ट के अंदर क्या दिख रहा है? जीआरई दिख रहा है या जीआरई नहीं है? यानी वो जीआरई जो भी है उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो एक तरह से बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस है इसका. ठीक है. Then what you see src folder. There is a src folder which is the source code folder where you kept all your .java files, right? And then you see some class path and dot project. This is something because it has appeared because you have created a project with the name demo. ठीक है, तो ये चीजें सेटिंग अपने आप आ जाएंगी इसमें. ठीक है. अच्छा, अब SRC और bin ये दो इंपॉर्टेंट फोल्डर हमारे लिए है. Let's go to the SRC folder because we are familiar with the structure of the SRC folder. Let's try to figure out what is there. So here in the SRC folder, what we have created a package in.ac.jamia hamdad, and inside that package we have created a class java prog.java. Let's see what's there in the SRC folder. You see there is an in folder corresponding to in.ac.jamia hamdad, the in part of it, right? Okay. Then if you go to the in, you will find AC, and then if you go to the AC, you will find Jamia Hamdard, and if you go to the Jamia Hamdard, then at last you will find this Java prog.java. So a package is essentially nothing but is translated to a directory structure. ठीक है, in any programming language. ठीक है. बैकग्राउंड में क्या होता है? वो एक फोल्डर स्ट्रक्चर में. ठीक है. अच्छा, पैकेज का एक और सेंस भी यूज होता है, जैसे पाइथन वगैरह में पैकेज यूज करते हैं, तो बेसिकली इन दैट केस यू बेसिकली टेंड टू अ थर्ड पार्टी पैकेजेस एज अ लाइब्रेरी. वहाँ पे अलग मतलब होता है. ठीक है. यहाँ पे जो पैकेज की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जब हमने किसी किसी क्लास के लिए क्लास को किसी पैकेज के अंदर डाला है, इसका मतलब एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर उसको डाला है. बात क्लियर होगी? फाइन. सो व्हाई डू वी क्रिएट पैकेज? Distribute the file separately. So for example, if I want to have a java prog.java file and another file with the same name in the same package, that's not possible, because in one scope two things with the same name cannot exist, right? But if we create another package in.ac.jamia melia, and inside that we create java prog.java, that is possible because it's a different package. Because what is the name of this program, or this file, basically this class, basically Java program. Yeah, you are right. That's not just Java program, that's a partial name. We call it a fully qualified name, where you attach a package name along with the class name.
So the fully qualified name for Java prog.java is in.ac.jamiahamdard.java program. Okay. Just like we have got two instances over here. So because we are not talking in terms of ID or the enrollment number as of now. So if we skip enrollment number and we have to identify them uniquely, how will we identify? We will try to identify by the name of their father, right? And if the father name is same, then we will try to identify by the name of grandfather, and so on. ठीक है, तो कई सारे कल्चर में आपने देखा होगा लोग अपने नाम के साथ अपने फादर का नाम जोड़ते हैं, राइट? है ना? तो this is something what we call as fully qualified name of a class. ठीक है? So actually the name of Java program is not Java program, but Java program should be called as in.ac.jamiahamdard.java program. ठीक है? पूरा नाम इसका ये है. So one thing is that we are creating a package to avoid the namespace collision. If we somehow get the same two classes with the same name, then there will be a collision, right? But if the package name is different, so that means there will be no namespace collision, even though we are using the same name of the class, right? Fine. तो अक्सर आप देखेंगे क्या होता है, जैसे कि अगर आपने से अपाचे अपाचे से कोई लाइब्रेरी को डाउनलोड किया, ठीक है? अपाचे के बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं और सर्वर्स वगैरह आते हैं, राइट? So it's a open source community, and then you will see that earlier it used to start with org.apache and then the name of the project, and then within the name of the project then you will have other directory structure will further classify what purpose it is meant to be. ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, apache.org नहीं समझ में आ रहा है कि apache.org क्या है, एक वेबसाइट के इन्होंने अपने नाम के नाम पर रखा है, ठीक है? And why we have a tendency to use as a convention the name of the website, right? In the package name is because of the fact that this is going to be unique. The website name is going to be unique. So the name of the class could be the same, but if it is packaged inside the name of the similar to the name as the website name, that guarantees that in the universe no one else will have a same fully qualified name as this name. बात क्लियर हुई? ठीक है? So that is the reason why I have preferred to choose in.jamia hamdard if I am assuming that I am building an application for the jamia hamdard. Correct? ठीक है? Okay. The other reason why we use the package is basically to organize the code better. For example, if the application being developed for jamia hamdard is say student management system, ठीक है? So, or rather admission management system, rather we should use a better concept to discuss. So in that case, in ac dot jamia hamdard, then we will create another package, say admission management system, or uh, amd ams, ठीक है? Dot, then everything, say for example related to student, will come under the nested directory, another part of the package, say for example student component, ठीक है? Then there could be another folder inside the same admission management system. There could be another folder with the name, say faculty management, ठीक है? Or another folder with admission say admission managers sort of thing, ठीक है? Which may return all the courses, and a user can fulfill the form and go further. So similar, there could be then the fees management system, ठीक है? ठीक है, fees management, there could be one folder. So under one folder there are multiple folders, and these folders are given a relevant name so that we should be in a position to identify that if we are looking for a student class, right, we should go to the student component part of the package, that means that folder, because we have seen it is essentially translated to a folder structure in the background, right? So in that folder or in that package, all the files which belongs to the student, okay, all the classes which belongs to the student are kept there.
ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो packages are also meant to organize, ठीक है, so that we are not confused where to find a particular class, right, a particular component of the class. Just like in a library you have got shelf, right? So you say this is the computer sciences shelf, then this is chemistry shelf, this is physics shelf, this is mathematics shelf, and in the computer science you further go, the shelves are subdivided into, say for example, data structure, operating system, Java programming, Linux, and so on, right? So it's much easier for you to get into that particular section, look for a particular your shelf, and then within the shelf that particular section to find the exact file within seconds, ठीक है। तो दो पर्पस हुआ आपका पैकेज का। वन इज अ वेरी क्लियर ऑर्गेनाइजेशन of all the classes which are the components, the lowest level components, right, of a application, and then to avoid the namespace collision, ठीक है। इन दो काम के लिए आप यूज करते हैं पैकेजेस को, ठीक है। Now with this knowledge, tell me, if you work in any other language, does this make any difference? It will not make any difference because it will be the same, right? Okay, so let's go to our demo project which is already created, and let's try to explore a few more things, right? So suppose I want to create a program for a calculator, ठीक? Simple calculator, ठीक है। So I will give the name of the class as calculator, right? Now this is a standalone program, right? So I would like to have a public static void main inside it. That means the main method which will give me the starting point to execute the program. Then I will say finish, right? Fine. Now even before we start, you know, with this completing this calculator, what we have to do is we have to think about the operations, ठीक है, the add operation, the multiply operation, the divide operation, the subtract operation, right? So let's suppose these are the operations that we have, these four operations are the four operations that we have to support, right? So what I will do is I will simply create few methods like public int add, and then inside this add method I am creating a function to add two numbers, right? So I should declare the parameter int x comma int y, for example, right? And what I will write here is that return x plus y. एक्चुअली थोड़ा सा मेरे इसमें बहुत डिम है ये, तो मुझे प्रॉपरली नज़र नहीं आता है, x plus y, ठीक है। So what if we call this particular function? This function has got the name add, and inside this bracket it is telling me that you have to pass two values, and the type of the values of both these values should be of type integer, okay? That means a number which are not floating point numbers, which are non-fraction numbers, and one number will be stored in a box which has a label x, the another number will be stored in a box which has a label y, and these box will work under the scope of these two curly braces. So the variables which are defined in the parameter are method local variables. That means they will work within the scope of the method. That means the body of the method, and the body is recognized by these two curly braces, ठीक है। तो इसी के अंदर हम एक्स वाई को रिफर कर सकते हैं, इसके बाहर रिफर नहीं कर सकते, राइट। और हमने क्या करा, फिर एक्स और वाई को ऐड करा, एक्स प्लस वाई, एंड देन वी चूज टू रिटर्न एक्स प्लस वाई, जो भी इसका सम आया, 5 और 6 अगर एक्स और वाई की वैल्यू थी तो 5 प्लस 6 11 हुआ, एंड देन वी विल ट्राई टू रिटर्न दिस 11, एंड हियर इंट इज समथिंग व्हिच इज डिस्क्राइबिंग द रिटर्न टाइप, कि आपका जो जो रिटर्न आप कर रहे हैं वैल्यू, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने का मतलब क्या है, कि हम उसके उसके एक तो उसके नेचर को बता रहे हैं कि ये नॉन फ्रैक्शनल नंबर होगा, ठीक है, और दूसरे उसके साइज को बता रहे हैं, ठीक है। टिपिकली इंटीजर हैज अ साइज ऑफ 4 बाइट्स, राइट।
तो अगर 4 बाइट्स है मतलब 4 बाइट से ज़्यादा की वैल्यू अगर आप डालने की कोशिश करेंगे, ऐसी लार्ज वैल्यू नंबर की डालने की कोशिश करेंगे, भले ही नॉन फ्रैक्शनल हो, जो कि इस 4 बाइट से एक्सीड करती हो, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है? तो हमने ये पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि जो रिटर्न होगा वो इंटीजर टाइप के बक्से के लायक ही रिटर्न होगा। ठीक? And then here is something called as public. ठीक है? Public is one of the SS specifiers, or rather we call as visibility control also. Visibility control specifier. We will discuss it later on, but just know that it's one of the most or the least restricted SS specifier. इसका मतलब ये एक तरह से ऐसा मेथड हमने बनाया है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी यूज कर सकता है। वो बात अगर अभी समझ में नहीं आ रही है, जो एकदम टोटली बिगनर है, तो वी विल ट्राई टू सी इन द लेटर क्लासेस। ठीक है? तो ये लाइन समझ में आ गई? इस पूरी लाइन को आपने सुना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड का प्रोटोटाइप बोलते हैं, राइट? इन मोर टेक्निकल टर्म्स और इन मोर टर्म्स दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री, वी कॉल इट सिग्नेचर ऑफ द मेथड। सिग्नेचर मेथड सिग्नेचर कहते हैं इसको, मेथड का सिग्नेचर बोलते हैं, राइट? ठीक है? ठीक है? तो ये मेथड का सिग्नेचर है। मेथड एक्चुअली बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, और इसके अंदर हमारे एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है कि दो जो हमें पैरामीटर जो पैरामीटर के थ्रू जो दो वैल्यूज मिल रही है एक्स एंड वाई, उन दोनों को ऐड करके हम उनको वापस कर दे रहे हैं। ठीक है? Similarly, I have to write a method for subtraction. So let me just copy paste and let me change the name as. देखिए अभी नाम चेंज नहीं हुआ तो क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि एक क्लास के स्कोप में दो मेथड आप सेम नाम से नहीं रख सकते विद द सेम पैरामीटर लिस्ट, एंड इट विल से इट्स अ डुप्लीकेट मेथड, राइट? So I have to at least change the name. So let me say sum, sorry, subtract sub. ठीक है? And then here I have to change the operation also, x minus y, assuming that x is larger than y, otherwise आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, राइट? फाइन। अगर हम चाहें कि नेगेटिव वैल्यू न लेकर के हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लें, तो उसके लिए मॉड ऑपरेशंस होते हैं, मॉडुलस, एब्सोल्यूट, सॉरी, एब्सोल्यूट ऑपरेशन होता है, एब्सोल्यूट हम लगा सकते हैं, और देन वी कैन जस्ट गिव द पॉजिटिव वैल्यू, राइट? नाउ लेट्स से पब्लिक int multiply. ठीक है? Again we will talk about the two parameter that we want to multiply, x and y. See, the names are being duplicated, x and y are being duplicated, but in a different scope, in a different scope. तो ये जो x y था वो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, खत्म उसकी कहानी। ठीक है? ये जो x और y था, अब ये नई चीज शुरू हुई, इसने ही इसको पे रहेगी, तो जब कंट्रोल इसके अंदर आएगा तभी वो विजिबल होगा। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे लेट्स राइट रिटर्न x multiplied by y. ठीक? And then let's divide public int div, and let's, sorry, and let's have the parameter, same parameter, int x comma int y. ठीक है? And what should we do? अभी एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने कोई रिटर्न नहीं किया। हमने सिग्नेचर में प्रॉमिस किया है कि हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी तक जब तक हम इसको रिटर्न नहीं कर देते, इसको तसल्ली नहीं होगी। दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट, ये कह रहा है। ठीक है? जैसे ही हम रिटर्न लगा देंगे ये चुप हो जाएगा, फिर परेशान नहीं करेगा हमको। ये कंपाइलेशन एरर है। ठीक है? क्योंकि अर्ली कंपाइलेशन कर रहा है ना ये। हाँ, रिटर्न x divided by y. ठीक है? assuming that x is greater than y, otherwise we will get the answer in fractions, right? मतलब फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1। ठीक है? प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया। ठीक है? अब हमें इसको रन करना है। Now you see the difference. This main method is a static method. It has got a static keyword over here, and the rest of the methods are not static method. ठीक है? तो अगर हम डायरेक्टली इनको कॉल करना शुरू की कोशिश करेंगे, जैसे लेट मी से add 5,7, दिस इज हाउ वी कॉल अ मेथड। मेथड का नाम लिया आपने, उसमें x की जगह एक वैल्यू पास करी, y की जगह एक वैल्यू पास करी, जितने पैरामीटर सबकी जगह एक वैल्यू पास करा हमने, और एक सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है? हाँ, तो अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम स्टैटिक मेथड से एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं। What is a static method? What is a non-static method? We will see later on. Just know that if a method is static, it can only call another method which has a keyword static before it. Otherwise, we cannot call it. Just know the rule as of now. ठीक है?
तो अभी हम इसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकते. So what we have to do is we have to basically create an object of this calculator class. So calculator is a class which provides a description. It has not provided any details about the description of the data, right? The reason, we do not need the data here. If at all we need the data, we will need some constant like pi, okay? Exponential and those things, right? Every method you can see is a self completed or independent method that will take something and return something. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में हमको जरूरत नहीं है. तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली हम उसी तरह लिख रहे हैं जैसे हम सी लैंग्वेज में लिखा करते थे. इवन सी प्लस प्लस से भी आप जो प्रोग्राम लिखते थे उसमें भी क्लासेस मल्टीपल क्लासेस बनाते थे. यहाँ पे सिर्फ एक क्लास बना रहे हैं, एक मेन मेथड बना रहे हैं और मल्टीपल मेथड्स बना रहे हैं, राइट? नहीं चलेगा क्योंकि मेन ही तो एंट्री पॉइंट है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा एप्लीकेशन बना रहे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, देन वन क्लास विल हैव द मेन मेथड, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट. उसके नाम से आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को एंड देन इट विल यूज ऑल द अदर क्लासेस विद इन इटसेल्फ. वी विल वेरी सून कम टू दैट पॉइंट, डोंट वरी. ठीक है, वी विल सी एवरीथिंग प्रैक्टिकली. हमारी क्लास पूरी तरह लाइव क्लास होती है, ठीक है, तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी जितना हो रहा है उतना आप बस घर पे जाकर के अपना टैबलेट या फोन ऑन करें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन आपने देख लिया है, इंस्टॉलेशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, और उसको देख करके आप अपना कोड करना शुरू कर दें. ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है, I will advise you to bring the laptop in the classroom and we will start the lab from Wednesday onward. Not today, but Wednesday. ठीक है, Wednesday onward आप लैपटॉप लेकर के अपना आए. ठीक है, प्रॉब्लम कोई आती है वहीं के वहीं हाथ के हाथ सॉल्व कराएं. ठीक है, फाइन. सो हाउ डू वी मेक an object? So the name of the class. अच्छा मान लीजिए कोई अगर वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना होता, ठीक है, तो आप कैसे कहते हैं int x is equal to 5 है, कर सकते हैं, करा है. मेथड लोकल वेरिएबल है, दोनों कर सकते हैं. जो आपने देखा है ना उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, और ये जो हम कर रहे हैं अभी ये मेथड लोकल वेरिएबल है. नहीं नहीं, यहाँ ग्लोबल जैसा कंसेप्ट नहीं होता है. just park your question for another 2-3 classes and you will start understanding what we are talking about. ठीक है, तो अभी समझ लिया. आपसे सिंपल सी बात है कि इंस्टेंस वेरिएबल एक होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, किसी मेथड के अंदर डिफाइन नहीं होते हैं, एंड देयर आर वेरिएबल्स व्हिच आर डिफाइंड इनसाइड द मेथड. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमने रिटर्न एक्स वाई करा है, इसकी जगह हम ऐसे भी कह सकते थे से इंट result, and the result is empty as of now, and then we will say result is equal to x plus y is equal to x plus y, and then let's say return result. Right? ये भी कर सकते थे, राइट, द सेम थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मेथड लोकल वेरिएबल यूज किया है ना, जो मेथड के अंदर जरूरत है. इसका स्कोप कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसके बाहर रिजल्ट को हम रिफर नहीं कर सकते, खत्म वो फिर. ठीक है, तो सिमिलरली मैंने एग्जांपल बताया कि अगर किसी आपको वेरिएबल की कोई वैल्यू डिफाइन करनी है और वो वेरिएबल अगर प्रिमिटिव नेचर का हो तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, उसका टाइप बताते हैं और उसकी वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज इंस्टेड ऑफ दिस प्रिमिटिव टाइप आई वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट विल होल्ड एन ऑब्जेक्ट और अदर रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इंट यूज करते थे वैसे क्या यूज करेंगे, डाटा टाइप क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कैलकुलेटर है, राइट, कैलकुलेटर से वेरिएबल नेम इज कैल्क. अब यहाँ पे चूंकि प्रिमिटिव नहीं है तो 5.5 या कैरेक्टर की वैल्यू इस तरह से नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, ये जो क्लास है इसका नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. हाँ बोलिए, अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी डिक्लेयर हुआ है, अभी ये इसकी कुछ असाइन नहीं हुआ है इसको. ठीक है, कैल्क इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर. ठीक है, क्या कह रहा है ये, क्या प्रॉब्लम है इसको भाई, कैलकुलेटर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप. क्या स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है ना. ओके, अब देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे पास आई, तो लगे आ गई है तो हम सीख भी लें इसको. देखिए हमने ये नाम और क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम बनाया था, तो अब यहाँ भी चेंज करें, फाइल को भी रीनेम करें. ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट काफी आगे चला गया होता तब ये क्लास नेम
बहुत जगह, हजारों जगह यूज हो चुका होता, बहुत जगह हम इसका इंस्टेंस बना चुके होते, हर जगह जाके चेंज करें, हर प्रोग्राम में जाके चेंज करें, क्योंकि डाटा टाइप की तरह यूज हो रहा है, राइट। तो अब एक आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसको रीनेम ना करने के बजाय आप यहाँ पे ऑप्शन करें, यूज चूज करें रिफ्रैक्टर, राइट क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करके रिफ्रैक्टर ऑप्शन आएगा, अब यहाँ से आप रीनेम करें, ठीक है। अब इसको सही नाम दे दें, स्पेलिंग मिस्टेक जो थी इसको हम रिमूव कर देते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। देखिए आपने यहाँ चेंज किया, यहाँ भी चेंज हो गया जहाँ यूज हुआ है, यहाँ भी चेंज हो गया जहाँ आपने फाइल नेम दिया है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, जिस चीज को आपको चूज करना है उस पे उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रिफ्रैक्टर का ऑप्शन आएगा, रीनेम करेंगे, द अदर रिफ्रैक्टर ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, वी नीड टू जस्ट रीनेम इट, ठीक है। तो न सिर्फ वो रीनेम होगा बल्कि उसका जहां जहां रेफरेंसेस है, चाहे वो फाइल में रेफरेंस हो, फाइल के नाम में रेफरेंस हो, ठीक है, किसी और क्लास में रेफरेंस हो, हर जगह जाकर के वो अपने आप उसको एक एक क्लिक पे चेंज कर देगा, राइट। चेंज हो गया हमारा, अब ये कोड हमारा सही हो गया, राइट। नाउ लेट्स से कैल्क डॉट, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते बल्कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, जस्ट लाइक एक पॉइंटर सी प्लस प्लस पे क्या करता था, किसी चीज को रिफर करता था, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एक तरह से एड्रेस स्टोर्ड है, जो रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट कहाँ है, हीप में है, ठीक है। तो उसको उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके हम इसके वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को, और उनके मेथड को भी इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। तो let's see, we want to invoke the add method, तो add method आपने यहाँ पे लिखा, और सिंपली add लिखने के बजाय अब calc डॉट add लिखेंगे, राइट। और हमने पास किया वैल्यू 2,3, ठीक है, इंटीजर वैल्यू। नाउ वी वांट टू स्टोर दिस वैल्यू इनटू सम वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल शुड बी ऑफ व्हाट नेचर, शुड बी ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रॉमिस क्या किया है कि आप इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आप रिटर्न जो कलेक्ट करेंगे, यानी calc डॉट add जो मेथड है, ये एडिशन करेगा 2 + 3 और 5 को रिटर्न करेगा, तो 5 जो रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे अगर हम छोड़ दें ऐसे ही तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक बक्सा बनाना पड़ेगा इसके लिए, इंटीजर रिजल्ट नाम से, ठीक है। अब इस रिजल्ट में वो वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपने कहा रिजल्ट, प्रिंट हो गया, राइट। अगेन आई वांट टू कॉल अनदर मेथड से रिजल्ट, देखिए आपकी बार इंट रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट कर रहे हैं, डिक्लेयर्ड ऑलरेडी हो चुका है, अब उस वैल्यू पे हम ओवरराइड कर रहे हैं नई वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल है, राइट। रिजल्ट इज इक्वल टू कैल्क डॉट सब्ट्रैक्ट, अब इसकी जगह वैल्यू हम दे दें, या यस, तो जस्ट वेट टिल द 35 डोंट कम हियर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड वी हैव गॉट result, right, and then we have got say we want to just let's try to finish it as of now, uh, time is getting over, so we have tried to run these two operations, add and subtract, and we have tried to print those values. Let's just quickly go to this button, this is run calculator.java, and if we run it, then we will see the output 5 and 1. 5 is the result of addition 2 plus 3, and 1 is the result of subtraction 4 minus 3, right? Enough for today? ठीक है।